seniors, and juniors. My name is Mustafa Shamsi, and I am pursuing mechanical engineering from JAMIA, MILLIA. And today, uh, I have been part of SAE, and I have worked for a lot of organization earlier in JAMIA, MILLIA. So today, our motive is research writing, and in this, what I'm planning is that बहुत से juniors हैं जिनके mindset है कि research करना या review paper लिखना, it's very difficult. It's a very drastic thing, and only scientists can do it. Just imagine I was I was one of you guys, and if I can do it, you guys definitely can. All right. So these are my past works. I have been part of SAE. I have built a co-card like in 2020. I participated in Indian karting championship. Had a really good hosting in MSME. It's a government and a government program. I have also done a workshop for the building of a go-kart, and also I have done my internship from King Abdullah University of Science and Technology, KAUST. Alright, so आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे जो बहुत फंडामेंटल होते हैं, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं and also the teachers and my senior friends who are to support and everybody. Thank you so much for that. But the juniors especially who have no idea about it, and even the seniors who have joined this just to understand what all what's there in research and review paper, and what is it all about. क्या है ये जो सब कहते रहते हैं कि scientists research करते हैं, review paper लिखते हैं, क्या है, what is this exactly? All right. So what I'm going to be telling you guys about, I recommend every one of you to take notes, और definitely मैं demonstration भी दूंगा किस तरीके से मैंने खुद पेपर लिखा और किस तरीके से मेरे review paper publish हुए. Shamsi bhai, can I just interject for a second? With regards to notes, you are definitely audible. With regards to notes, everyone who is in the ASME SAE R&D department, it is compulsory for you to take notes because there will be evaluation after this, because this is a workshop. So in a workshop, you have to do work. So Shamsi bhai is going to be presenting for around 40 minutes. He will be explaining you all the nitty-gritty stuff about the research paper writing. Then we'll have a 20 minutes question answer session, okay, where you can clear your doubts if you have any, and after that we'll the topic allotment will be there, okay, for 10 minutes. 6 different topics are there. 3 are general, open to all, and 3 are specifically from the side of SAE and ASME. They're for a competition. You can even compete in that regard, and there's a cash prize for that. That will be explained near the end of the meeting. So please get your pen and paper or apps like OneNote or whatever you have. So yes, Shamsi bhai, please continue. All right. So how many of you actually feel like that एक बहुत बड़ा it's just only geniuses can do it, और सिर्फ scientists कर सकते हैं, या it's a very difficult task to write a review paper or a research paper? I hope most of you must have been. तो हमारा आज का जो motive है, it's to make very easy for you guys, and it's to make it so simple. All it takes your will, और अगर आप interested हैं तो definitely एक बार आप जब एक चीज में घुस जाते हैं, you're gonna work on it, right? तो हम आज जो topics cover करेंगे, these are research versus review. इसके अंदर जो research paper होते हैं, उसके अंदर review papers भी होते हैं, एक चीज, articles. For those who don't know, I know many of you might know, but this is especially for the newbies. I'm gonna explain from scratch, बिल्कुल starting से होगा ये. तो review paper भी एक चीज होती है, और किस तरीके से paper लिखा जाता है. पेपर लिखा जाता है तो sources of materials क्या होते हैं? What are the sources of materials? All right, referencing, plagiarism क्या होता है? Plagiarism, publishing, presenting होगा, और एक क्लास में एक question answer session होगा just for you guys. All right, okay. तो let's get started with review versus research. Okay, तो review जो होता है, and I definitely recommend जितने भी students हैं definitely do understand this, और review paper से start करें ताकि उनके लिए आसानी हो जाए. Let's explain this.
रिव्यू पेपर के अंदर जो स्टार्टिंग होती है वो होती है एक टाइटल और एक एफिलिएशन। एफिलिएशन यानी कि आपका डिजिग्नेशन, एवरीथिंग ऑल अबाउट योरसेल्फ, हु डिड इट और XYZ। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो आपका समरी होती है, किस बारे में है पेपर। और कीवर्ड्स, क्योंकि कीवर्ड्स आमतौर पे कहाँ काम आते हैं, जब आप जर्नल्स या बड़े लेवल पे पब्लिश करते हैं तो वहां पर किस तरीके से फाइंड किया जाए कि किसी ने अगर गूगल स्कॉलर या आई विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज गूगल स्कॉलर एंड एवरीथिंग, लेकिन इन सब पे सर्च करेंगे तो पेपर कहाँ से मिलेगा। इंट्रोडक्शन होगा, किस बारे में है पेपर, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, एंड लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू इज ऑल द एक्सप्लेनेशन। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग जब हम लोग 10th और 12th में हुआ करते थे, लैब फाइल्स बनाते थे, तो उसके अंदर हम लोग एक थ्योरी लिखते थे। इट्स समवट लाइक इट बट इट्स एक्सट्रीमली डिटेल ऑन अ रिसर्च लेवल, ठीक है। की फिगर्स, डायग्राम्स जो हम मेंशन करेंगे, एंड इन द एंड कंक्लूजन्स। बीच बीच में हम लोग लिटरेचर रिव्यू के अंदर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये सब भी मेंशन करते हैं। ये सब चीज़ें की होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इंक्लूड करता है। मैं आप लोग को डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा थ्रू माई पेपर जो मैंने लिखा था, किस तरीके से हम लिटरेचर रिव्यू को शो करते हैं, राइट। तो कंक्लूजन हो गया, एंड देन रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मैंने एक टोटली अलग सेक्शन इसलिए बनाया बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने रिव्यू पेपर लिखा, अब रिव्यू पेपर क्या होता है इन टोटल, इन एंड आउट मैं समझाता हूँ। रिव्यू पेपर होता है कि फॉर इंस्टेंस बहुत सारे साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर्स लिखे, राइट। अब आपको एक्सप्लेनेशन देना है, you have to give an explanation to them in a summary, in your perspective. You have your own topic, आपने एक डोमेन चूज किया, आपका एक टॉपिक है, तो आप उस टॉपिक को लेकर एक रिव्यू पेपर कैसे लिखेंगे। और रिव्यू पेपर क्या होता है, ये होता है बहुत सारे पेपर्स को कंबाइन करके, जितने भी पेपर्स आप चूज करेंगे, दूसरे रिसर्चर्स के यूज करेंगे, उनको कंबाइन करके एक सिंगल पेपर बनाना। इट्स ए रिव्यू पेपर। रिसर्च, द वर्ड रिसर्च इटसेल्फ सेज इट, कि वो रिसर्च आपकी अपनी मेहनत होती है और आप अपने तरीके से करते हैं उसे, तो वो एक अलग चीज है। एंड ऑल्सो इसके अंदर डिफरेंस अच्छा खासा होता है। एंड ऑल्सो हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, रिसर्च कैन बी ए फेलियर एंड ऑल्सो अ सक्सेस। आपने रिसर्च किया, यू फाइंड इट अगेन, you found out a topic, either it can be a new topic or an old topic। आपने एक टॉपिक को ढूंढा, उसके बाद उसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया। फॉर इंस्टेंस हम लोग जैसे मशीनरी से रिलेटेड लेथ मशीन से हमने फाइल बनाई, या कोई हमने प्रोजेक्ट किया जो हम मैकेनिकल, दिस इज अ रेफरेंस फॉर योर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। आई नो देयर आर अदर स्टूडेंट्स टू। फॉर इंस्टेंस आप मॉलिक्यूलर लेवल पे करते हैं, देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम BSc एंड एवरीबडी, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। आप लोग जो रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर जब आप लास्ट में रिजल्ट आता है, इट कैन बी ए फेलियर, राइट। सो इन दिस वे वी राइट अ रिसर्च पेपर। तो इसके अंदर डिफरेंस ये है कि लिटरेचर रिव्यू के बाद हम अपना मेथोडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन शो करते हैं, वेदर इट वाज व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, राइट। फिर आप अपना रिजल्ट लिखते हैं, डिस्कशन होता है, डिस्कशन आप अपना उसके बारे में जो आपने डिस्कस किया, व्हाट आर योर रिव्यूज, फाइनल आपके क्या इसके बारे में कंक्लूजन है, वो लिखते हैं। और फिर रेफरेंसेस, इट्स द सेम एज द रिव्यू। थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है कि रिव्यू पेपर्स में रेफरेंसेस बहुत होती हैं, रिसर्च पेपर में रेफरेंसेस आर वेरी लेस, बिकॉज आप अपना न्यू स्टडी करते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि रेफरेंसेस बहुत हों, आपने दूसरों की रेफरेंसेस यूज करी हो, दूसरे पेपर्स यूज करे हो, बट इट इज क्वाइट लेस कंपेयर्ड टू रिव्यू पेपर। ऑलराइट, हाउ डू वी राइट अ पेपर, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बनेगा। इट इज सो सिंपल कि आप लोग जब आप समझेंगे किस तरीके से किया जाता है, तब आप समझेंगे कि क्या करना है और किस तरीके से you'll have to move forward with it। बट उससे पहले I would love to give you a demonstration of a paper। यहाँ पे जैसे रिव्यू पेपर है, जिन लोगों ने नोट डाउन कर लिया है अपने नोट्स को साइड में रखें, इन चीज़ों को देखें, ये जो सामने रखी हुई है, टाइटल, एवरीथिंग। और मैं अब अपना पेपर दिखाता हूँ, हाउ इट वर्क्स। रिसर्च मेरा एक इस पे था, ओके। This is one of my works which is under process, which is basically published. It's completed, but we are waiting for the publishing. Alright, तो जो मैंने बताया था आप लोगों को, सबसे पहले टाइटल हो गया, The Prospects in Semi-Autonomous Robotic Surgeries। I hope am I audible? Everything is perfect, right?
Yes, yes. ऑलराइट, ठीक है. द फर्स्ट थिंग इज टाइटल. आप क्या टाइटल अपना चूज करते हैं, और मैं अभी ब्रीफली समझाऊंगा बिकॉज अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है. तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ वेरी ब्रीफ मैनर. प्रोस्पेक्ट्स इन सेमी ऑटोनोमस रोबोटिक सर्जरीज, ये मेरा एक टॉपिक था. सो आई जस्ट आई फाउंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, वी राइट एन एब्स्ट्रैक्ट. मैंने कहा था ना एक पेपर की समरी होती है, एब्स्ट्रैक्ट इज अ समरी. वो ये पूरी लिखी, and then I calculated what would be the best title for this abstract for the whole paper. Abstract, वो title is a thing जो आप सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं. इट्स नॉट कंपलसरी. आप जो अपना डोमेन आपने चूज कर लिया है, जाहिर सी बात है आपके पास एक फिक्स्ड टाइटल है, लेकिन आप उसे चेंज करते रहेंगे लास्ट तक. इन द एंड व्हाट हैपेंस कि जो आपने पहला टाइटल चूज किया था वो चेंज हो ही जाता है, बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ गुड आइडियाज. आपने दूसरों के पेपर्स देखे होते हैं, चीजें होती हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका मैं कंपेयर भी करते आता हूँ. आई गेस देयर आर पीपल जो नहीं लिख रहे होंगे. तो अब एफिलिएशन हो गया. एफिलिएशन में शो कर दूंगा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे एफिलिएशन ये हो गया. नाउ आई एम गोना मूव अप टू कीवर्ड्स. यहाँ पे कीवर्ड्स हैं कि व्हाट ऑल कीवर्ड्स डू वी हैव. कि यहाँ पे मेरा हेल्थ केयर से रिलेटेड था, सो वी आर गोइंग टू राइट हेल्थ केयर, सर्जरी, सेमी ऑटोनोमस रोबोट, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज वी हैव इंक्लूडेड दीज टॉपिक्स. तो इस टाइप से हम कीवर्ड्स लिखते हैं. आई होप मोस्ट ऑफ यू गाइज आर नाउ फीलिंग बेटर, क्योंकि ये होता है ना जब सुनते हैं तो थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट नाउ व्हेन यू आर लुकिंग एट इट, इट्स लाइक वेरी बेसिक, इट्स वेरी सिंपल. सो यू गाइज कैन डू इट. नाउ इसके बाद जो है कीवर्ड्स के बाद हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ. इंट्रोडक्शन के अंदर वी इंक्लूड व्हाट ऑल आर लाइक की टॉपिक्स. अब जैसे हमारा था रोबोट्स इन फील्ड ऑफ हेल्थ केयर. क्या हेल्थ केयर में होता है, आप एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, बेसिक होता है. कुछ भी आप अपने बारे में बेसिक बता रहे हैं, व्हाट इज इट गोइंग टू बी अबाउट, राइट. सो आप इंट्रोडक्शन देते हैं. मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है. ठीक है, then we move we are on the introduction. Then we move to 1.4. इंट्रोडक्शन ही मेरा बहुत लेंदी था, आई गेस. नहीं हो चुके. ओके, इंट्रोडक्शन आई गेस ऊपर हो चुका. यस, इंट्रोडक्शन उतना ही पार्ट था. देन वी स्टार्टेड फ्रॉम 1.1. फिर हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया कि कोविड-19 में रोबोट्स के क्या बेनिफिट्स थे. फिर अपना मैंने इसके बारे में डिफरेंट टाइप्स, आप क्या क्या जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, व्हाट ऑल आर द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट विच यू आर गोइंग टू कीप इन माइंड, जो आपको लिखने ही लिखने हैं. ये नोट डाउन कर लें. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अगर आपको मेंशन करना है, डिफरेंट टाइप्स, कैटेगरीज, ऑलराइट. और उसके अलावा डेफिनेशंस ऑफ मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स जो आप मेंशन कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो उसके बारे में डिटेल होनी चाहिए, ताकि जो भी पहली बार पढ़े. एक रिव्यू क्या होता है, एक रिसर्च पेपर क्या होता है, किसी और के लिए ही तो है. इन द एंड समवन एल्स इज गोइंग टू यूज इट एंड पब्लिश इट एंड रेफर इट. साइट करेंगे. साइटेशंस के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से साइट किया जाता है एंड अदर थिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है लिटरेचर रिव्यू में. देखिए, मैंने यहाँ पर हर टॉपिक को बहुत डिटेल से बताया विद एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर दिए. लिटरेचर रिव्यू में होने चाहिए विच आर टू बी वेरी गुड. दे आरंट सपोज्ड टू बी वेग. बहुत ये ना हो कि आप बात इधर कर रहे हैं, एग्जाम्पल कुछ और दे दिया. मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं या आपका जो रिसर्च वर्क होता है, वही आपको जो है पब्लिशिंग के चांसेस बढ़ा देता है. पब्लिशिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन रिमेंबर द वर्ड्स. ठीक है, तो अब इसमें मैंने कैटेगरीज जो बताया था, कैटेगरीज हो गई, टाइप्स हो गया, एंड एडवांटेजेस, लिमिटेशंस. दीज आर द थिंग्स विच आर सपोज्ड टू बी मेंशन. हाँ, इसमें ये याद रखिए कि आप अपने सब टॉपिक्स जरूर मेंशन करें. जैसे 1 हुआ, 1 के नीचे मैंने 1.1, 1.2, 1.3, फिर उसके अंडर भी मैंने 1.41 किया. तो इस तरीके से आपको एक बहुत एक क्लीन वो मिलेगा. ऑल्सो वन ऑफ माई फ्रेंड जस्ट रिमाइंडेड मी अबाउट इट कि आप अपना जो फॉन्ट साइज है वो सब जगह सेम रखेंगे एक्सेप्ट फॉर द टाइटल्स. मेक श्योर दैट यू गो समवेयर लाइक 12
and New Roman Time, something like that. उस font का नाम है Times New Roman. Times New Roman. Thank you. Keep it that way. All right. Size 12. फिर आप जो है अपना डिटेल में बताएंगे. Make sure you mention whenever you are mentioning research or a review of someone else, make sure आप जो है diagrams और figures का use करें. उससे क्या डिपेक्ट होता है, क्या आपके जो रिजल्ट आए हैं, मैक्सिमम ऑफ द रिसर्च ना आप लोगों को पढ़ना नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा. आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों के लिए भी आसान करें और आपके लिए भी लिखना आसान हो. तो आप जो है फिगर में, जैसे मैंने इतनी चीज लिखी लेकिन मैंने फिगर में दे दिया द ग्रोथ in robotic surgical procedure 2012 2012 to 2018 was somewhat like 1.8 to 15.1%. इतना डिफरेंस था. that what we are mentioning here, right? तो इसमें मुझे इतना पढ़ना नहीं पड़ा और आपको भी समझ में आ गया. तो इसी तरीके से और भी फिगर्स होंगे. हाँ, लिटरेचर रिव्यू के अंदर एप्लीकेशंस लिख लिए, एग्जांपल्स, दैट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग. मोर एग्जांपल्स, बहुत डिटेल्ड एग्जांपल्स है. डा विंची रोबोट, ऑटोनमस सर्जरी, बेनिफिट्स जो मैं बता चुका हूँ, मोर्टेलिटी रेट वगैरह, इन सब चीज़ों के मैंने फिगर्स दे दिए हैं और बहुत डिटेल में कैटेगराइज कर दिया है, एग्जांपल्स दे दिए एक एक चीज़ के. ऑलराइट. तो आप इस तरीके से जो है पूरा लिटरेचर रिव्यू यहाँ तक लिखेंगे. अब मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था which I am about to tell you guys is कि ये मुझे कंटेंट कहाँ से मिला और मैं किस तरीके से इसे मैंने जो है उतारा. राइट. मैंने कहीं ना कहीं से रेफर किया होगा. आई एम नॉट अ साइंटिस्ट और अ रिसर्चर जिसने अपनी तरफ से कंटेंट बना के डाल दिया. इट्स नॉट इवन पॉसिबल फॉर देम टू. वो भी कहीं से रेफरेंस करते हैं. तो जिस तरीके से यहाँ मैंने रेफरेंस मेंशन किए हुए 1 2 3 4 5 6 XYZ, वो हर उसके अंडर, जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिया था, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर इंस्टेंस छोटा पैराग्राफ लूंगा. मोर ओवर रिडक्शन इन रिकवरी टाइम के बारे में मैंने यहाँ बताया था. दिस इज अ पैराग्राफ विच इज गोइंग टू बी लाइक which I have taken from somewhere else, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन किया. Now it is not at all allowed, it's not permissible and also very wrong that you copy as it is. वो आपका डिनाई हो जाएगा, which is called plagiarism. मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा. plagiarism आप एक कीवर्ड रख लिए, आई गेस आपने टॉपिक्स में रख लिया होगा. अब मैं बताता हूँ कि ये 64 क्या है और किस तरीके से इसके बारे में और डिटेल में बताता हूँ आपको. ऑलराइट. ठीक है. 65 पे जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे एक टॉपिक के बारे में था. ये इसकी रेफरेंस है और मैं इसको डिटेल में आपको रेफरेंसिंग किस तरीके से की जाती है इन ए बिट समझाऊंगा. आई होप वी आर नॉट वेरी लेट. ऑलराइट. नाउ मूविंग ऑन टू द पेपर. हाँ, फाइनली यू राइट द कंक्लूजन एंड देन यू रिफर कि आपने क्या टॉपिक्स कहाँ से चूज करे और किस तरीके से मतलब रेफर किया, बेसिकली कहाँ से आपने पूरा पेपर बनाया है, किसकी हेल्प ली है. ऑलराइट, मूविंग नेक्स्ट. हाउ डू वी राइट अ पेपर. ठीक है. बहुत स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम बायोलॉजी साइड, फ्रॉम इंजीनियरिंग साइड, प्रॉब्ली मास्टर्स के भी हों. I know that मास्टर्स को पता होगा how do we do it, but still just explaining कि for instance मैकेनिकल से कोई है या फिर किसी और फील्ड से कोई है, तो वो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ऑफ डोमेन, सेलेक्ट ए डोमेन आप सेलेक्ट करेंगे कि मैकेनिकल से मैंने जो है फ्लूइड्स चूज कर लिया और मैंने अब उस फील्ड के अंदर, मुझे उसके अंडर आई एम गोइंग टू चूज अ टॉपिक एंड देन इट्स बेसिकली गोइंग टू बी अबाउट फ्लूइड एंड उस तरीके से मैं पेपर लिखना शुरू करूंगा. आइडिया, अभी हम सिर्फ एक जनरलाइजिंग एक आइडिया ले रहे हैं कि हम कौन सी फील्ड में जा रहे हैं और किस बारे में लिखेंगे. फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट यू माइट बी हैविंग अदर स्टफ, फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, every one of you guys might be having something else. ठीक है. The most important thing when you choose a topic is get the right guidance. I hope there are professors or make sure that you choose a professor which is
लाइक रिलेटेड टू योर टॉपिक, टू योर डोमेन। ये ना हो कि आपने फ्लूइड चूज किया और आप प्रोफेसर के पास चले गए थर्मोडाइनमिक्स के। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रेफरेंसेस कि सर आई हैव टू राइट अ पेपर अंडर फ्लूइड्स, देन यू एक्सप्लेन मी। इट इज नॉट यू नो, इट्स नॉट रेफरेबल बिकॉज कहीं ना कहीं उसमें इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, वंस यू चूज अ डोमेन, what you go under is you read and read, all right? बिकॉज आप एक टॉपिक चूज करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, आप एक बार अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं इस फील्ड के अंडर किस बारे में जो है अपना एक रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर लिखने वाला हूँ, तभी आप जो है यू नो यू विल बी एबल टू राइट समथिंग और यू नो डिस्कस समथिंग। इट्स ऑल्सो वेरी रिकमेंडेड कि आप एक ग्रुप अपनी चूज करें और एटलीस्ट दो से तीन लड़के have at least 3 to 4 people, all right? So that when 4 brains connect with each other, you know, you have a lot of ideas. Even I wrote a paper with some of my juniors. Even Adnan is present here. He helped me a lot and everybody is there. ठीक है, तो एक और 11 होते हैं, हिंदी मिसाल भी मैं दे दूं तो it's better you discuss with you know with the people of the same interest that you have. Understand the basic concepts जो आपने read किया, उसमें आप basic concepts समझिए. Now is the most important part. अब आप अपना niche choose करेंगे, अब आप जो है अपने टॉपिक का सब टॉपिक चूज करेंगे. मैंने फॉर इंस्टेंस लिया कि मुझे आई हैव टू राइट अबाउट यू नो व्हीकल्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स. नाउ ऑटोनोमस व्हीकल्स के अंदर तो बहुत टॉपिक्स हैं. Which topic am I going to choose? I'm going to talk about sensors or something else, maybe braking system. कोई भी एक चीज हो सकती है ना. Now I'm going to choose a topic, उसके अंडर मैं जो हूँ पेपर लिखूंगा. तो अपना एक नीश चूज कर लें, फिर अपना एक रोड मैप, स्ट्रक्चर, स्केलेटन, देयर आर मेनी वर्ड्स टू यूज. एक अपना एक वो बनाए, जैसे इवन कोई पीपीटी दे रहा होता है तो एक वो रखता है ना अपना कि मैं ये इस बारे में बात करूंगा. आई शोड यू अ रोड मैप स्टार्टिंग में क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे. तो एक अपना रोड मैप रखिए, एक अपना आइडिया रखिए कि इस तरीके से आई एम गोइंग टू गो. या अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो मेक श्योर कि यू प्लान आउट एवरीथिंग अर्लियर, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करें. वरना थोड़ा बहुत ये होता है कि डिफिकल्ट हो जाता है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग. एवरी वन ऑफ यू कैन डू इट. इफ आई कैन, मैं भी एक टाइम पे आप लोगों की जगह पे था. यू कैन डू इट. ऑलराइट, नाउ फिक्स अ राइटिंग स्टाइल. डोंट गो ये वही हो गया जो फॉन्ट वाली बात मैंने पहले बता दी. और राइट सब हेडिंग्स, ये भी मैंने बताया था. 1, 1.1, 1.2 इन चीज़ों को मेंशन करके रखिएगा. डिटेल्ड निटी ग्रिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इसके अंदर आपके फिगर्स और जो चीज़ें आप डिटेल में सब टॉपिक्स में भी मेंशन कर रहे हैं उसके बारे में ठीक से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ये नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ, अगेन द सेम एग्जांपल, आई एम टॉकिंग अबाउट A and I'm writing about B. Has like make sure that it's not like that. ठीक है. नेक्स्ट, ये मेरा फेवरेट पार्ट है. तो अब मैंने एक टॉपिक चूज किया. फॉर इंस्टेंस मैंने व्हीकल चूज किया, ऑटोनोमस व्हीकल चूज किया. तो मैं कहाँ से टॉपिक्स निकालूंगा? मैं ये जो रीड यू गाइस माइट बी सेइंग ये रीड कहाँ से करें, हम कहाँ से करें? इतनी चीजें बता दी, सब कर दिया, तो कहाँ से करना है? दैट व्हाट मैटर्स, राइट? तो सोर्सेज ऑफ मटेरियल बहुत हैं. बुक्स, I know most of you guys, अब जब से ऑनलाइन का एरा आया है, nobody is referring books, but still I recommend online PDFs and make sure you search for books which are you know credible और मतलब known हो, उनसे आप स्टडी करिए. Google Scholar एक वेबसाइट है which helps you in finding out research papers जो किसी और के लिखे हुए होते हैं. मे बी वेरी फेमस साइंटिस्ट हो सकता है मेरा लिखा हुआ हो गूगल स्कॉलर पे मिल जाए, जो एक्सेप्ट किया हो जर्नल्स ने. जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस और बाकी चीज़ें, पब्लिशिंग कैसे होती है वो मैं बाद में बताऊंगा, जो उन्होंने पोस्ट किया हो या फिर उनके थ्रू हमारा गूगल स्कॉलर तक पब्लिश हो गया हो. रिसर्च गेट इज ऑल्सो अ वेरी गुड वेबसाइट एंड अ वेरी गुड प्लेस टू फाइंड योर इंफॉर्मेशन. और साई हब, मैं इसके बारे में थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू, आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट गूगल स्कॉलर क्या है, ये कैसे वर्क करता है और इसमें बेनिफिट्स क्या है, राइट?
Am I audible? I hope everything is clear. Hello. Yes, bhai. Yes, yes. Yes. Everything is perfect, perfect. All right. तो हम लोग गूगल स्कॉलर पे जाते हैं. A lot of pages. Yes. गूगल स्कॉलर क्या है? मैं एक बार आप लोगों के लिए भी सर्च कर देता हूँ सो दैट कोई वो ना हो. आप लोग, इट्स वेरी सिंपल. आप गूगल स्कॉलर सर्च करें, पहली लिंक क्लिक करें, ये आ गया गूगल पार्ट 2 फॉर रिसर्चर्स. ये गूगल का ही वो है, लेकिन जस्ट फॉर द रिसर्चर्स. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सो एंड सो कि मैं ऑटोनोमस व्हीकल के बारे में बात कर रहा था. ठीक है, नोट इट डाउन. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रेफरेंसेस. गूगल स्कॉलर है तो उसको डेफिनेटली नोट. सबसे पहली चीज ही आ गई ऑटोनोमस व्हीकल्स. ठीक है, व्हेन आई सर्च इट, राइट, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपना डोमेन सेलेक्ट करके रखें और नीश. मैं क्यों कहता हूँ ये चीज? मैंने ऑटोनोमस व्हीकल पहले कहा कि आई चोज अ टॉपिक, ऑटोनोमस व्हीकल, खुद चलने वाली गाड़ियां, आई चोज इट. बट मैं उसके बारे में जब तक एक टॉपिक सेलेक्ट नहीं करूंगा बहुत कंफ्यूजन होगा. व्हाई? लुक एट दिस, वी हैव मोर देन 202,000 रेफरेंसेस. रिजल्ट्स नहीं कर सकते, राइट? तो अब जो है मैं, ठीक है, फॉर अब आपने चूज किया, आपको थोड़ा बहुत पता करना है कि क्या है इसमें और क्या क्या टॉपिक्स बहुत फैंसी हैं, कौन से बहुत ज़्यादा फेमस हैं, कौन से बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो आप इस तरीके से जो है, आई होप आई एम नॉट रनिंग आउट ऑफ टाइम, आप इस तरीके से जो है इन्हें सर्च कर सकते हैं. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द सोशल डायलेमा ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल, theoretical practical challenges, XYZ, बहुत चीज़ है. या for chemistry or bio students, let's say cells on molecular level, molecular characterization, और बहुत चीज़ें मेरे समझ में नहीं आएगी, लेकिन या यू हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. इवन यहाँ पे देखें उससे भी ज़्यादा है. यू हैव 49 lakhs समवॉट अबाउट. ठीक है, तो आपने एक बार अपनी नीश चूज करी. फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ ऑटोनोमस सेंसर्स, व्हीकल सेंसर्स. ठीक है, कम हो गए फ्रॉम 20 lakhs, वी आर नाउ ऑन 6. अगर अब मैं आप लोगों को एक हैक बताऊंगा गूगल स्कॉलर का, बहुत इंपॉर्टेंट हैक है, और मेक श्योर यू गाइज नोट इट. एंड आप हमेशा व्हेनेवर यू रिसर्च एनीथिंग, कभी भी किसी के पेपर्स को देखें या whenever you are about to find something, make sure you use these hacks. यहाँ पर आप जाएंगे on this is a filter system which is going to help you guys to make sure that you are not on a very old era. आप 97 के पेपर्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप करंट स्टेट में हैं. क्योंकि मैं मैक्सिमम क्या करता हूँ, आई यूज अ कस्टम रेंज ऑफ बिटवीन 2012 and the latest timing 2022. Search 6 lakhs हमारे पास रेफरेंसेस थी. नाउ वी आर अप टू 1 lakh, राइट? और अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ 2021 से 2022 के पेपर सर्च करना चाहता हूँ तो मुझे 19,000 रेफरेंसेस मिल जाएंगे और मैं इससे रिलेटेड कुछ भी पढ़ सकता हूँ, एनीथिंग. और अगर और मैं अभी और बताऊंगा कि आप, ये मेरा फर्स्ट हैक है. आपके पास बहुत फिल्टरिंग सिस्टम होता है, सॉर्ट बाय डेट, ये तो बहुत वैसी चीज़ है. 2 चीज़ें होती हैं, रिसर्च पेपर, रिव्यू आर्टिकल. मैंने समझा दिया कि रिसर्च पेपर क्या होता है, जो आप रिसर्च करते हैं. रिव्यूज जो होते हैं, जो आप किसी और का टॉपिक उठा के देन यू कंबाइन इट, कंपाइल इट एंड देन यू प्रेजेंट इट सो दैट वो स्पेसिफिक टॉपिक जो आपने नया टॉपिक चूज किया उससे रिलेटेड आप लोगों को प्रेजेंट कर सकें. तो यहाँ पर आपके पास एक अलग से ऑप्शन भी है कि आप रिसर्च ना लेकर यू कैन हैव रिव्यू आर्टिकल्स टू. और पेटेंट्स इज डिफरेंट. पेटेंट्स मैं नहीं समझाऊंगा इस वर्कशॉप में बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल फॉर यू गाइस, और इट इज फॉर एवरीबडी. लेकिन अभी यू विल गेट इट, वंस यू आर इन दिस फील्ड यू विल अंडरस्टैंड.
पेटेंट्स इज बेसिकली कि उस चीज को ओन कर लेना. आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग इट मच. ठीक है, तो रिव्यू आर्टिकल इज जो रिव्यू पेपर्स होंगे. अगर मैंने रिव्यू आर्टिकल्स खाली निकाले तो जस्ट 4000 रिजल्ट्स है मेरे पास. और नाउ मैं अब अपनी रिसर्च अपने टॉपिक को लेकर स्टार्ट कर सकता हूँ जो भी मुझे अंडरस्टैंड करना है. ये हैक 1 है. दूसरा हैक ऑन गूगल स्कॉलर, अ वेरी वेरी वेल नोन, अ वेरी इंपॉर्टेंट हैक यूजिंग these hyphens, apostrophes, this doubles. Okay, sorry. Yeah, this one. ठीक है, using these. अब ये कैसे हेल्प करेंगे आपको? फॉर इंस्टेंस आपने एक टॉपिक चूज किया, मैं बात करना चाहता हूँ. अब मैं एनी टाइम कर देता हूँ, मैं आपको शो करता हूँ डिफरेंस क्या है इन सब में. और मैं कर देता हूँ नॉट रिव्यू एवरीथिंग. वी आर बैक टू 6. ठीक है. एंड ऑल्सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं अभी के लिए क्लियर कर देता हूँ. नाउ सेंसर और ऑटोनोमस व्हीकल्स के बारे में हम बात कर रहे थे. नाउ हाउ आर दीज गोइंग टू हेल्प? ये सेकंड हैक डेफिनेटली नोटेड डाउन कि किस तरीके से आपको हेल्प करेगा ये अपना स्पेसिफिक टॉपिक चूज करने के लिए. नाउ ऑटोनोमस व्हीकल सेंसर्स, दोनों चीजें अलग अलग थी, मैंने मेंशन करी. वी हैव 6 लाख रिजल्ट्स. ठीक है, अब मैं इसके बीच में डालता हूँ autonomous vehicles, and then what I do, I press space. मैं दोबारा से ये करता हूँ और मैं सेंसर्स को अलग मेंशन करता हूँ. ठीक है, now look at it, boom, now you have 96,000 results. और ये स्पेसिफिकली सेंसर्स अंडर ऑटोनोमस व्हीकल या फिर सेंसर्स एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स को किस तरीके से इन्होंने दोनों टॉपिक्स को साथ में लेके चले हैं. अलग अलग हैं लेकिन बोथ आर मेंशन इन टॉपिक्स, इन द टॉपिक्स, राइट? सो दिस इज हाउ गूगल स्कॉलर इज गोइंग टू हेल्प यू. मैं मैक्सिमम चीजों में ये यूज करता हूँ, तो मेक श्योर यू गाइज ऑल्सो यूज इट. और अब यहाँ पर वी हैव 94. आई गो फॉर 20 फ्रॉम 2021 टू 2022. वी हैव 17 रिव्यू आर्टिकल्स. वी हैव ओनली 1500 रिजल्ट्स. मैं उसके बारे में अब जो भी मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगा, I'm gonna just search it and then I'm gonna go under it. Even चलें, let's do something, you know, something fun. मैं सेंसर सर्च करता हूँ और मॉलिक्यूल सर्च करता हूँ. ठीक है, look at this. Okay, we have electrochemical sensors. उसके बारे में आ गया. या फिर we can add कार्ड्स ऐड करता हूँ या व्हीकल्स ऐड करता हूँ. we have topics which are going to relate biology and vehicles together, लेकिन बहुत एक pattern and also in a very formal manner. Alright, ठीक है. ये I hope all of you were able to understand Google Scholars, right? Yes. If anyone wasn't, so please वो लास्ट में लास्ट में चैट में लिख देना प्लीज, तो क्लियर कर देंगे. या Q&A कोई भी डाउट हो, राइट इन द चैट बॉक्स. लास्ट में प्लीज बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स. सेशन होगा तब आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा. एंड ऑल्सो बी राइट, अदनान इज सेइंग राइट, बी अटेंटिव बिकॉज लास्ट में एक आपके लिए एक सरप्राइज है. इट्स अ वेरी, यू नो, इट्स समथिंग फॉर यू जो आपको बहुत बेनिफिट करेगी, लेकिन आपको उसके लिए अटेंटिव होना पड़ेगा. वो अभी हम शेयर नहीं करेंगे. ठीक है, सोर्सेज ऑफ मटेरियल हो गए. मैंने पेपर नहीं खोला. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज साई हब. पहले मैं साई हब खोल लेता हूँ. सॉरी, yep. SciHub is a website. SciHub क्या है? I won't recommend everybody, but now we guys are students, तो हमारे पास हर चीज का access नहीं होता है. Many of the students, many of us might be financially weak to purchase a whole book. 10,000 हज़ार की बुक्स होती हैं, 10,000 हज़ार के पेपर्स के पेटेंट्स होते हैं, एक्सेसेस होते हैं. फॉर इंस्टेंस मैं अपना टॉपिक लेता हूँ. I go for autonomous vehicles and sensors. All right. So when I go
this might be open. Yeah, this is a very good journal elsewhere. mm, I guess it's open or not. Open access. No, this isn't for us. Pardon. लास्ट वाला खुली, लास्ट वाला। अच्छा था, ठीक है ठीक है, हाँ थैंक्स। अभी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैंने एक टॉपिक खोला, ऑफलाइन मैपिंग ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल्स विद लो कॉस्ट सेंसर्स। ये खोला मैंने, पेपर देख रहा हूँ, जैसे मैंने अपना पेपर दिखाया था इसी तरीके से। ये हेडिंग है, दिस इज द टाइटल ऑफ द पेपर, और ये एल्सवेयर एक पब्लिशिंग जर्नल है, इसमें पब्लिश्ड है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, और इज दिस ओपन सोर्स? इट इज इन राइट। हाँ, तो इसमें मेरे पास मुझे ना रिसर्च के बारे में पता चला, ना मुझे ज़्यादा रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पता चला। इसके अंदर बहुत लिमिटेड लिखा हुआ है इसमें, तो विच मीन्स दिस इज इंट एक्सेसिबल। हाँ ओके, सॉरी गाइस, लुक एट दिस, परचेज पीडीएफ। ये थर्ड हैक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कह रहे हैं कि परचेज करें हम पीडीएफ को, विच लुक एट दिस, कि एक पीडीएफ में $24। आई माइट नॉट बी एबल टू यू नो, अगर मैं 10 पेपर देख रहा हूँ तो मैं $240 डेफिनेटली नहीं वो कर पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू पे। ठीक है, तो वी हैव, दिस इज वेरी स्मॉल हैक, कि मैं इस पेपर को खोलूंगा। बी अटेंटिव हेयर, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन समझ आ जाएगा, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप इस पेपर की, मैंने ये पेपर खोला और गूगल स्कॉलर पे मैंने सर्च किया, मैंने फिल्टर किया, आई चोज दिस पेपर एंड देन आई ओपनड इट। ठीक है, व्हेन आई ओपनड इट, मैंने इसकी लिंक कॉपी करी एंड देन आई सर्च्ड साईहब। साईहब मैं एक बार और आपके लिए सर्च करके दिखा देता हूँ कि साईहब, यू वेंट हियर एंड देन गो फॉर द एसई वर्जन। ये एक सीक्रेट हैक बता रहा हूँ। ठीक है, एंटर योर रेफरेंस, वो जो मैंने कॉपी किया, आई एंटर्ड इट एंड ओपन। आई गेस ये वाला पेपर जो है वो DOI लिंक कॉपी करिए उसका, DOI। क्या कह रहे हो? DOI लिंक, DOI लिंक कहाँ से? खोली खोली, ठीक है, वो DOI लिखा है ना, वो कहाँ लिखा है? नीचे शेयर साइट के नीचे। ओके, ये ना, हाँ हाँ ठीक है। अगर वैसे ना खोले, देन यू कॉपी द DOI लिंक एंड देन यू गो here and then you copy your reference. I hope this works. Let's hope. Finally, उस पूरे पेपर का, the thing which was $25-30, we have now open access to it. Look at this. ये पूरा पेपर जो मैंने बताया था कि टाइटल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है। I hope we are not, yeah, we are almost to the end. यहाँ पे इसके अंदर पूरा पेपर मेरे पास है, including the research, the figures, everything, the references, the conclusion। इसके अंदर इन्होंने डिक्लेरेशन किया है। ठीक है, we have very less time, तो मैं अब, I hope you guys understood what is SciHub, how you can open source everything, and Google Scholar के बारे में भी समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा डिटेल्ड, जैसे ये लिखा हुआ है, इसके बारे में बता दूंगा। ये ऑथर्स के नाम हैं, कौन से साल में ये पब्लिश हुआ, किसने पब्लिश किया, स्मॉल थिंग्स, साइटेशंस, कितनी साइटेशंस हैं, कितने लोगों ने इसे यूज किया। आई वाज टेलिंग यू अबाउट रेफरेंसेस, राइट, कितने लोगों ने इसे यूज किया, रिलेटेड आर्टिकल्स, ये सब चीजें बहुत काम आती हैं। वंस यू आर इनटू इट, यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पीपीटी। सोर्सेज ऑफ मटेरियल डन। वन ऑफ माय वेरी फेवरेट पार्ट, प्लेजरिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा काम मेरे ख्याल में 50% पेपर में काम यही होता है। पेपर जो हम लिखते हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ हाउ डू
हाउ डिड आई रोट माई पेपर, ठीक है, मैंने इतने पेपर्स को यूज किया, आई ओपन दीज पेपर्स, ठीक है, आई यूज समवेयर अबाउट 81 पेपर्स, और फिर मैंने इन पेपर्स को यूज करके जितना भी मेरा ये लिखा हुआ है ये मैंने साइट किया, ये मैंने मेंशन किया, ठीक है, बट इट्स नॉट एट ऑल सेम। अगर आपने यू ओपन अ पेपर, फॉर इंस्टेंस मेरा ही पेपर खोला एंड देन यू वेंट लाइक कि हाँ ये वाली लाइन अच्छी लग रही है, यू वेंट टू दिस या यू वेंट टू द कंक्लूजन XYZ, तुमने कुछ भी डाला है, आप लोगों ने कुछ भी डाला, यू कॉपी इट एंड देन यू रेफर इट नीचे, मेरे पेपर का नाम यू विल बी रेफरिंग इट। उसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि यू डोंट कॉपी पेस्ट एज इट इज। आप पेपर्स के अंदर से जो चीज यूज कर रहे हैं कंटेंट, वो एज इट इज नहीं कॉपी करेंगे, उससे होता है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म इज बेसिकली कॉपीइंग समवन्स वर्क, एंड इसके अंदर रूल्स होते हैं। ये इस तरीके से, जैसे मैं अपना और डिटेल में दिखा देता हूँ कि जब हम लोगों का पेपर आया था, हम लोगों ने प्लेजरिज्म में से दिया था कि प्लेजरिज्म परसेंटेज कितनी है, कि हमने कितना पार्ट एज इट इज कॉपी कर दिया है और हमारा इसमें से कितना पार्ट हमने वर्ड चेंज किए हैं या वी री रोट इट आवरसेल्व्स, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें बहुत सिमिलर थी, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, नोट डाउन करिएगा, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू कि इन पार्ट्स में पहले प्लेजरिज्म था, नाउ इट्स 100% क्लियर, नाउ द पेपर इज 100% क्लियर, फाइन। तो प्लेजरिज्म होता है बेसिकली कॉपीइंग समथिंग एज इट इज एंड विच इज गोइंग टू गेट यू इन ट्रबल। इसमें क्या किन चीजों का जो है ध्यान रखना पड़ता है, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर दैट यू कीप इन माइंड। सॉरी, यू हैव टू कीप द सिमिलैरिटी इंडेक्स, जो आप जिस पेपर से कॉपी करेंगे अपने पेपर में, ये नोट कर लें, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलैरिटी इंडेक्स 20% से लेस होना चाहिए, मतलब आप उनका 20% पेपर कॉपी कर सकते हैं। इट इजंट लाइक कि आप पूरा पेपर एज इट इज कॉपी कर दें, उसमें से कुछ पार्ट्स में, जैसे ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अपना, कि इसके अंदर मैंने ये लाइन या ये लाइन छोड़ दी थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल मिनिमाइजिंग, अब मैं उसका कोई नया आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ सिनोनिम, मैं कोई एक सिमिलर वर्ड नहीं ढूंढ पाया, तो आई हैव टू यूज इट, तो वो प्लेजरिज्म में आ जाता है, which is a bit unfair, I know, but उसके भी एक कुछ tricks होती हैं which you can use and you can completely remove plagiarism from your paper. Individuality and originality, make sure कि आप अपनी originality रखें, और creativity and novelty. I hope you guys understood. ठीक है, इसमें अब मैं आप लोगों को हैक बताता हूँ, it isn't in the PPT but note it down. क्या करना है, make sure every 3 words और every 4 words आर सिमिलर, बट उसके बाद जो वर्ड होगा जिस पेपर से आपने कॉपी किया है, इट हैज टू बी डिफरेंट। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे पेपर से आपने कॉपी किया है कि दिस टेक्नोलॉजी इज यूटिलाइज्ड, ठीक है, एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, bhai. या Yes. दिस टेक्नोलॉजी इज यूटिलाइज्ड, तो मैं इन लोकेशंस नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, लोकेशंस लाइक मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा टोटली, दिस टेक्नोलॉजी इज यूटिलाइज्ड इन लोकेशंस दैट आर रिमोट, मैं लिखूंगा देयर आर लोकेशंस दैट आर रिमोट इन विच दीज टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड और यूटिलाइज्ड, और कोई और सिनोनिम, तो मैंने पूरा सेंटेंस चेंज कर दिया, लेकिन मेक श्योर कि एवरी 4 वर्ड माइट बी सिमिलर, मेक श्योर यू चेंज एवरीथिंग, लेकिन अगर 4 वर्ड्स या 3 वर्ड्स एक लाइन में है, there won't be any plagiarism, कोई कॉपी नहीं, आपको कोई कॉपीराइट नहीं डालेगा, there won't be any plagiarism। लेकिन once you exceed 4 words, आप 5 words पे आते हैं, आपने for instance this technology is utilized in कॉपी कर दिया, आपका plagiarism बढ़ जाएगा, ठीक है। I hope everybody understood what is plagiarism. It plays a very important role, क्योंकि जब पूरी मेहनत कर लेते हैं और फिर आता है ना कि 40% plagiarism, तो बहुत दुख होता है, और फिर उतना ही टाइम लग जाता है जितना टाइम पूरी रिसर्च में लगा। रेफरेंसिंग, जो रेफरेंसेस के बारे में हम बात कर रहे थे, वो किस तरीके से करी जाती हैं और क्या होती हैं, मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दूंगा। मेक श्योर कि आप राइट फॉर्मेट में लिखें और सही तरीके से साइट करें। नंबर्स के बारे में मैंने बता दिया
कि मैंने जैसे कि ये पैराग्राफ अपने पेपर से उठा के कोई और सा पेपर बनाया, तो मैंने 3 और 4 से ये लाइन कॉपी करी थी। 3 और 4 दो अलग अलग पेपर्स हैं। अब मैं आपको ये पेपर्स एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पे रेफर किए गए। रेफरेंसेस एक अलग सब हेडिंग बना लें, एक हेडिंग बना लें, और इसको मेक श्योर यू राइट इट एंड अंडरस्टैंड किस तरीके से रेफर करते हैं, क्योंकि आपका पेपर देयर इज नो वे कि पेपर एक्सेप्ट हो विदाउट रेफरेंसेस। ठीक है, तो अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पर ना ये लिखा हुआ है दिस केपी विषय आर नेम 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 ईयर दिस नेम, उसके बाद ब्रिटिश जर्नल और 266 1/4। ये क्या है? ये फोर्थ पेपर मैंने इससे कॉपी किया, लेकिन आई मीन आई चेंज्ड इट, बट व्हाट इज इट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज द फैमिली नेम। वशिया जो है इसके अंदर फैमिली नेम है, और ये सिंगल है एक्चुअली। मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ। अयंगर इज अ फैमिली नेम, एंड देन केपी इज द इनिशियल, जो फर्स्ट नेम आएगा। और जब सारे नाम लिख जाते हैं, 2020 इज द ईयर जब ये पेपर पब्लिश हुआ, और इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक ऑन द सप्लाई चेन इन हेल्थ केयर, ये पेपर का टाइटल है। द थर्ड थिंग इज द टाइटल। फिर ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये इस पेपर का जो है वो है, व्हाट डू वी से, जिस जर्नल में पोस्ट किया गया। पब्लिशिंग रिमेंबर द वर्ड पब्लिशिंग, ठीक है। पब्लिशिंग सोर्स और पब्लिशिंग प्लेस जहां पे उन्होंने पब्लिश किया। और ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस जर्नल के अंदर 26 कैन बी वॉल्यूम या लोकेशन हो सकती है। इस जर्नल की जो 26th वॉल्यूम है, उसके अंदर जो 6th लोकेशन है, उसमें ये पब्लिश हुआ 1 to 4। तो इतना होता है रेफरेंस। दैट्स इट व्हाट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। डेमोन्स्ट्रेशन वाज, हाँ डेमोन्स्ट्रेशन एक मैं छोटा सा दे देता हूँ। This isn't okay. Adnan, how many minutes do we have? I think we have crossed 55, but if you want to take 2 more minutes, that would be fine. Just 5 more minutes, I hope so. 5 more, okay. From 11:07, we'll start question and answers, okay? Yeah, Please alright. do write down your doubts and questions, so we'll answer them right away. Okay. तो यहाँ पर फॉर इंस्टेंस, अब मैं रेफरेंसिंग के बारे में एक और चीज बता दूं। आपने एक पेपर देखा, उसके अंदर रेफरेंसेस हैं, तो आप इसको कॉपी करेंगे, एंड देन व्हाट आर यू गाइस गोइंग टू डू इज, अगर जैसे कि कोई पेपर देखा आपने, उसमें रेफरेंस आपको पसंद आई, तो आप गूगल स्कॉलर पे जाएंगे। यू आर गोइंग टू गो इन गूगल स्कॉलर, एंड एज इट इज you can just copy down that reference. Sorry I'm taking a lot of time. I hope it's beneficial for you, और ये आप ही लोगों के लिए है, so please be patient and let's hope इसका एक अच्छा रिजल्ट हो। Look at this, we have the same paper. Yeah, I guess I hope ये सही से कॉपी किया मैंने। या फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं 75th, ये एक मैंने पेपर कॉपी किया, and then I just बेसिकली आपका वो पेपर आ जाएगा एज इट इज। फाइन, रेफरेंसिंग हो गया। नेक्स्ट वी हैव पब्लिशिंग एंड प्रेजेंटिंग, ठीक है। तो पब्लिशिंग और प्रेजेंटिंग जो मैं बात बता रहा था, देयर आर 3 सोर्सेज जिसमें आप अपने पेपर को फाइनली, वी आर अबाउट यू नो टुवर्ड्स द एंड। सो how are you supposed to make your paper go somewhere jahan everybody can benefit? You want to post it in a journal, you want to present it in a conference or seminar and guest talks. Journals wo hoti hain jahan par aap matlab they are very famous in and they help you to post to post your paper. इनके अंदर पोस्ट किया जाता है, इनके अंदर पब्लिश किया जाता है आपके पेपर्स। कॉन्फ्रेंसेज होती हैं बाकायदा सेमिनार की तरह, या एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर आप अपना पेपर एक्सप्लेन करते हैं, रिसर्च एक्सप्लेन करते हैं, और फिर वो कॉन्फ्रेंसेज वाले डिसाइड करते हैं वेदर दिस पेपर इज गुड इनफ कि हम इसे जर्नल में पब्लिश करेंगे या रिसर्च आर्टिकल में करेंगे या कहाँ करेंगे। एंड वी हैव सेमिनार्स एंड गेस्ट टॉक्स। ऑलराइट गाइस, एनी क्वेश्चंस? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द Q&A सेशन. Right, exactly. So, thank you, Shamsi bhai. That was really beneficial the way you explained it, and
I think it was made really clear. So if anyone wants us to like summarize also in short, I think we can give a 5-minute summary as No, well. no, it's fine. It's fine. We will be Many people have we'll be joined a bit late. we'll Yeah, be sharing you the we'll be yeah. sharing this. The recording is certainly there, but if you want And like a also, quick rundown, and also that can be done. I'll just I'll just give you the contact details so that any one of you who have Right, right, right. books or anything, you can just Gmail me. You can contact me on LinkedIn and also on Instagram. Thank you so much. Right. If anybody has any question or something, Yeah, definitely. I think we have a few questions. Um, First one was by Almas Ansari. It's a bit on a tangent, but it is still relevant. Sure, sure, sure. Which holds more value when you are applying for master's review or research paper, or is it the same thing in terms of value? Look, the first Shamsida, thing, I think you are applying for master's, right? So I think you can give a yeah, good. even in my case, I am applying for masters. Definitely, research paper has a lot of weightage, but make sure that you don't go towards it, because in bachelor's you have final year project, you have a lot of things, so you cannot give your whole time to your research work. Research time में एक साल लग जाता है, but a review paper you can make it within a month, a period of 2 months. So make sure that आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोई भी स्टेप लें, क्योंकि अगर आप रिव्यू पेपर शो करते हैं यूनिवर्सिटीज को फॉर योर मास्टर्स, इट्स गोना हेल्प यू इन व्हाट वे कि मास्टर्स जिन प्लीज माइक अपना डिसेबल कर दें. Mic कौन आई गेस नॉइज आ रही है. ओके. Shamsi bhai, Muzakkir sir is going to join, so please everyone welcome Muzakkir sir. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर. आई एम सॉरी, मैंने बहुत लेट ज्वाइन करा है अभी. It's okay. It's okay. It's fine. very delightful. थैंक यू हो चुका है आई थिंक. नहीं सर, we are on the Q&A session. It's very I'm very happy that you're here. Really happy sir. It's Thank you so seriously an much. honor to have you here. So guys, I think you can go ahead with the Q&A session. We have now Muzakkir sir with us, so you will get a real professional insight Definitely. now. So what things you want to ask. Okay, moving on. I think there is, Muhammad Siddiqui has asked a question. Do you think the same format is followed internationally? He's talking about formats like APA format, IEEE format, those kinds of things. Let me show it to you. Yeah, there are different formats. There are basically, for demonstration, definitely contact me personally. I'll explain you everything. Lekin there are certain nitbit which are different. हर कॉन्फ्रेंस का, हर जर्नल का, सबका एक फॉर्मेटिंग अलग होती है. Everybody have has their own. Everybody have their own way. Next. Okay, Mohammed Sono is asking, can you please tell again that hack? Sono, I think just contact me personally. Just contact me. Yeah, you can contact him or you can go through the recording as well. Just text me on Instagram. जितने भी students हैं, जितने भी लोग हैं, मुझे Instagram पे ping कर दें और follow whatever you just want to do. मैं पूरा explain कर दूंगा. I am down for this, and I hope that I am able to help you guys, because it's very delightful for me. Right. Wajiha Tabassum has a question. How do we get in contact for the conferences? Is it through the professors, or do we have to manage that ourselves? So there are conferences which are published within the universities. Clearly mentioned किया जाता है. You get links कि you can directly go to the conferences. But when you are a beginner, I would definitely prefer go to the specific professor of your niche or your topic. आप उनसे contact करें और उनसे बातचीत करें. They are definitely going to help you in a very, very good manner. Sir, Abhi, please stop now. You did it, sir, because you help a lot of students in their publishing work. So I think conferences के लिए तो you can go to the Google search. Yes. And then you can create an alert also. So if you create an alert, it will automatically come to your inbox.
Yes, select the field in which you want to present your paper. अच्छा, थैंक So यू सो your, मच। yeah, आई ऑल्सो, मुझे भी नहीं पता था सर। नहीं बहुत सारे alerts हैं, जैसे naukri.com है. जी जी जी। On that same pattern you have such you can say websites that will provide you all the information about all the conferences. Right, right. Okay, another. See, I'm not taking the questions in any particular sequence. So, like, I'm reading them as they come. So, your question will be answered. So, please be patient. Rabia Iqbal asks, what's the initial point to start a research project? Like, I'm a bio student. I want to explore biotech field. How to start and connect to the people of the same field? As I said, Rabia, I think it would help if you specify what college you are from. मुजक्कर सर I'll प्लीज give it एनलाइटन द to स्टूडेंट्स, इट वुड बी ग्रेट। आप सही टाइम पे हैं एक्चुअली। Right. देखिए, if you want to start research, first thing you have to find out is what do you like. Okay. Yes sir, we explained. Now suppose there are 5 things in front of me, and it is easy for me to select which one I like and which one I don't like. Okay. But if suppose there is nothing in front of me, how do I know which thing I like and which I don't like? So for a research work, you have to explore the domain area. For example, if something for example, in biotech field, if there is something which is attracting you, you type that keyword and search for the research proposal. And the best way of searching for the research paper is the Scopus and the Web of Science. Okay, so these are 2 authentic places from where you will get the best quality research paper. Okay, you also have Google Scholar, but Google Scholar has got so many research papers which does not have a quality standard. Okay, it contains all research papers. There are a lot of results, like एक लाख तक results होती हैं। Yeah, you will find millions and millions of research papers in Google Scholar. But if you go to Scopus and if you go to Web of Science. Sir, can you please mention in the comment chat box? Yeah. I'll do that. Okay. This is Scopus, and then you have Web of Science. So these are the 2 authentic sources from where you will get the good quality research papers, which are peer reviewed, which have international standard, which are acceptable by the engineering community as such, or other communities, medical communities, and so on. Okay, so if you are in biotech, if you are in mechanical engineering, if you are in any stream of engineering, if some word is attracting you, take that word, it's a keyword, type into the Scopus and Web of Science and find out how many research papers are there. And then each word will take you to one research paper in a particular field. Read the paper, not the full paper, but the abstract. Try to find out if it is of your interest. Okay, continue with this exercise, get hold of 5 or 10 papers, and probably you will have an idea as to what is your liking and what is your disliking. Okay, once you understand your liking, move into that area. Okay, how you can move into that area? Select one research paper, go to the references in the last of the paper. Yes. Try to search and read the references which that particular paper has used. So that is tracking from where that research paper has come to you. And then I think gradually when you read papers, you will become familiar, you will become, you can say, more interested in something. And then by this process, you can reach to the place of your own choice. So that is the way you select your research area. Okay. And once you select your research area, then the second step begins, how to collect different research papers which are combining and giving you a particular perspective.
I think it will take a long time for me to discuss that. Probably it is not the. I think that's a really good summarized answer. And Rabia, one more thing, since you said you're from Aligarh Muslim University, so you can get in touch with the professors who are there in your department. You can just look them up on Google Scholar. Every professor has a Google Scholar profile or a Research Gate profile. Okay, so you can look through the faculty members and you can get in touch with who is doing research in the field that you are interested in. As Muzakir sir said, whatever word you find interesting, you go and search which professor is doing like similar research on that. Okay, I think that will help you. Who was it? Who was it? Rabia Iqbal. Thank you so much, Rabia. Next. Okay. They can contact me also. I can also help them. Okay. Yeah, definitely contact Muzakkir sir. He is, he My can, email ID, I'm putting it in the chat in box. every Okay? field. Yeah, you can just Yeah, get in touch with. definitely share your email ID in the chat box. Okay, another question by Tanya Yadav. Okay, is there any word length to be considered while writing a research paper or a review paper? No. And can it be a friendly language? As for language, I think it should be formal. Word length ka Shamsi bhai bata do. The thing is, in case of word length, make sure that you are providing all the details in a proper manner, the way I explained it to you. So I guess when the word limit reaches certain amount, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने सब कुछ mention कर दिया. No, I think there is Muzakkir actually sir, a can you, particular Muzakkir sir, is there anything? 7,000 some words, is it right? Even 7,000 or in our 6,000 case, words. yeah, in the paper we have somewhere about 8,000. Okay, actually, with respect to the language, I mean, I don't know what friendly actually means. Yeah. I think she means informal, like using words like Yeah. can't or don't or won't, stuff like that. Yeah, No. you definitely can't. Actually, actually a research paper means that you are putting up a thesis, it is your own perspective, and then you are putting up arguments in support of your thesis so that it can be understood by the community. Okay. And it should not be in the first person that I have done this experiment or I have carried out this experimental study. It will never be in the first person. Okay. So, and friendly language means if you are able to put a good argument which people can easily understand, that is all. And as far as the length is concerned, there are two different type of research papers. One research paper is an open access paper in which the author has to pay some fees. Okay, there is a limit on how many number of pages you can have in the research paper. If you have more pages beyond the maximum limit, you will have to pay more money for the publication. The other category is not an open access, where there are certain limitations depending upon the journal. Okay, there are certain journals which say that there is no limitation on the number of pages. You can have 32 pages long research paper, you can have 50-page long research paper, or you can have just a 3-page. Okay, so there are different journals, they have their own you can say constraints. So it will be known to you the moment you select a journal and then you try to submit your research paper. Initially they will tell you what type of format is needed. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Another question. There is one paper which says how much long does it take to write a research paper. Okay. Yeah. Actually, there are different ways of attacking a research problem. Okay. So it is just like a course. Okay. So you have 21 days targeted time. You have 31 days targeted time. You have 40 days targeted time. You have 60 days. So depending upon the time that is available to you, you can create a plan, action plan in which you can invest your time and come up with a research proposal. Okay. It's completely dependent upon how much time you are investing. Absolutely. But I think minimum time is around 20 to 40 days. Yes, sir. Okay, another question from Muhammad Kaf. Which field should we choose for writing paper if we want to go for masters, not having interest in any particular field? Kaf,
this is a very It's definite like for masters in whichever course you want to opt for. आपको कोई भी जो भी फील्ड जिस भी फील्ड में जाना है you are going to choose that particular topic और आप उन प्रोफेसर से कांटेक्ट करेंगे जो आपके कॉलेज में है या even you can directly contact to the professors who are in the particular college जिसमें आपको एमएस के लिए जाना है. I know there are many students जो एमएस को टारगेट कर रहे हैं तो आप उन प्रोफेसर्स को भी जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैन आई वर्क विद यू, कैन आई डू अ रिसर्च वर्क. लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ करना होगा व्हाट्स योर क्रेडिबिलिटी, हाउ परफेक्ट यू आर. right. In short, I'd say one thing is that there are two ways of approaching it. One is pick up a university in which you want to get admission in masters. Okay. In that university, pick up the area in which you want to work. Okay. And then find out how many professors are working in that area. Okay. Select those one or two professors, identify their domain area, start working on the research papers which they have written. Read the papers which they have written, and that will be the starting point for you. So gradually you will try to understand what is the work which they are doing, and then you can come up with your own ideas. Okay, so you can share your ideas with those professors whether you have written a full research paper or not, but if you gain some understanding of that research area, you can share your thoughts and perspectives, and you can write an email to the professor, as Mustafa just said. Okay. Another question we have, the recent one, Muhammad Siddiqui. How effective is either research/review paper of the paper in order to pursue masters? I think this has been answered right now. And Aman Khan asks, if we write a review paper, then how can we manage plagiarism? Because in review paper we use only published papers. So yeah, I hope you heard me क्योंकि उसको explain कर रहा था. I explained you earlier. I hope now your doubt is clear. You need to rephrasing what you are citing. The way I demonstrated earlier उसी तरीके से. If any one of you have like a very specific question जो lengthy हो या later on you get it, do contact Muzakkir sir or me. It would be great. We are ready to help you out. Right. Any other? In review paper, when you are giving the reference, okay, if you are giving the reference, you can directly pick that portion from the research paper and put it in your paper which you are writing. Okay, provided you are citing the research paper from which you have taken. Next thing is you can have your own comments. Now your own comments will be something new, then there should not be any issue with the plagiarism. No sir, but still you'll have to change the words. कि ये होता है कि 4 words से ज़्यादा अगर similar है तो वो plagiarism में आ जाता है. For journals like Elsewhere and other journals. Okay, in that situation you put it into the 2 commas, inverted commas. Yes. If you put that particular portion in double inverted commas, it will not be taken as a plagiarism because it is just like quoting something. You're quoting from a research paper, it is not going to be. Exactly. अब मतलब ऐसे भी नहीं करने लग जाना पूरा पेपर कोट quotation marks में. You have to like keep in mind. And generally in our university, it is the best way is that it should be 5% plagiarism. Yes. But if there is no way you can avoid it, it could go to 10. Sir, journal sentences होते हैं is but इनकी वजह से plagiarism आ जाता है. तो there are certain reasons कि आप कुछ कर नहीं सकते तो आ ही जाता है. Like एक sentence it is the best. अब मैं it is the best को नहीं change कर सकता तो वो usually वो consider कर देते हैं plagiarism में. तो इस तरीके से फिर उसमें there is one thing more, Mustafa, that it also depends upon how you are setting the plagiarism software. Okay. So when we receive reports from our students, okay, then we have to get the plagiarism report generated by the Turnitin software which we have in JAMIA. Okay. So we specify that okay, the sequence of word could be, I mean, you can decide it to be 3 or 4 or 5 or 7. It's up to you. Okay.
Okay, Yes. but obviously the best way is to have 3 words, because but then it will going to be a very tough job. Yes, it is. It is. So make it 7. That will help you out in finding out the plagiarism. But it's your Turnitin report. If you are submitting into any journal, the journal will have their own number of words which they are using it to find out the plagiarism, which you don't have control over. Right. Hmm. Okay, okay. Thank you, sir. One question. I think Zainul Afrin will get your questions shortly. It's a very good question. Arij Ahmed asks how a first year engineering student should start in a research field. एक सेंटेंस में आई थिंक इसका आंसर आप दे सकते हैं. It's the whole explanation. या आप प्रोफेसर से कांटेक्ट करें एंड यू स्टार्ट विद योर डोमेन. एक सेलेक्ट. Yeah, first explore your interests, contact a professor, and then you can एंड इट्स बेटर कि आप 1 साल का टाइम लें और एक बार मतलब once you are फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं करते स्टूडेंट्स, बिकॉज दे एक्सप्लोर देमसेल्व्स कि किस चीज में इंटरेस्ट है. एंड मैक्सिमम ऑफ द टाइम आई गेस देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में ही रिसर्च में या रिव्यू में घुस जाते हैं. तो टेक योर टाइम एंड देन इट्स फाइन दैट यू आर लाइक यू आर नॉट अर्ली. It's okay. I have one suggestion here. For the first year student, start the research in the first day of your joining the university. Right. When you take the first step in the college, take the first step in research. Definitely. Oh, sir, what about interest? जो बच्चों को if they don't know what's their interest. Everybody have got some interest before coming to the university, na? Yeah, right. Perfect. So explore that for few months, and you will find out that there are many interesting things in that particular area. Okay. One question there is. Zainul Afrin, right? Assalamu alaikum. I am a final year student of mechanical engineering from AMU. I have quite some experience in paper writing, but I am stuck at how to shape a paper into a patent ready document. Can you guide me through that? Thank you. I think Muzakkir sir is best suited to answer. Please enlighten us. I think patent is very different from a research paper. There are different type of patents. Okay. One type of patent is related to a product. Okay. So if you are developing a new product which has not been developed up till now, then you will have to establish one thing, which is the novelty. Okay. Novelty means that you just can't combine 5 different things and create a new product. It will not be a novel type of a product. There will not be any innovation in that. There must be some novelty. So a research paper is very much different from a patent. Okay. If you think of a product, it must have some novelty, something new, which uses the scientific principles which are known to everyone, but in a manner which has not been used previously by others. So one very important, you can say, procedure is, again, go to the Scopus, and instead of searching for a research paper, search for the patents. So there is a separate heading for patents. And then there are Google patents also. You can search for Google patents, and there is one encyclopedia of patents. There you find out the things on which you are working, find out what similar patent have been granted already. And then the format of writing a document for patent is, very much different from writing a research paper. There is a very typical standard language that is being used in writing a patent document. All the information is available on the Indian Patent Office. Okay. If you go to the website of indianpatents.com, you will find all the formats. It's a very lengthy procedure. Generally, what people do is that they hire a consultant so that they can write and prepare all the documents. But I have submitted around 4 or 5 patents. One, I have done it separately, 3 patents with my MTech and PhD students. So we have done our work entirely on our own. But Zainul Afrin, if you are able to contact me on my email, I can share those documents with you so that you will have an understanding how you write a patent document.
It's a very specific and very, you can say, involved work. Right, right. I think we'll just take two more Thank you, questions. Two Professor more and questions. Afrin. Yeah. Thank you, Zanafan, for your question. Two just questions. And she asks, sir, nowadays many people say that Google shares wrong information sometimes. So is it safe to search on Google for our research? I think you I are told you the first, you can say, source is Scopus, which I have mentioned in the chat box. Second one is the Web of Science. okay. And she, please do keep that in mind. Thank you for your question. Musab Masood asks, what role do citations play in a research paper? Sir, please enlighten us. Where is the question? Musab Masood, he's asking, what role do citations play in a research paper? In a research paper, sir. Why do we Okay, cite papers? actually, citation actually means that if you have written a research paper and people are finding it useful, they will use that research paper as a reference in their own research papers. Okay. For example, if one of my student has come up with a novel method of multi-criteria decision making, okay, so that is a novel method which people are finding very useful and very effective and is solving a lot of problems and is overcoming the deficiencies of previous methods. So they are using the method in solving their problem, so they are citing it, which means that they are saying that I am using this MCDM method in my research work, and they are giving the reference to that particular paper. So that will become one citation. Similarly, if a bigger community is using your work and they are impressed and they are getting more information from that work, they will put your paper as a reference in their paper and it will keep on adding with the citations. And obviously, something which is becoming popular, which is being appreciated, and you can say taken very nicely by the researching community, higher will be the number of citations, more will be the respectability of your research work, and correspondingly you will become a hero. It has become a competition who has the Yeah. most citations. But please remember that self citations are generally not recommended, and then you don't fall into the trap of just focusing on citations. You know, Right. citations is just a byproduct. If you do something good, people are, you can say, bound to follow that. Going to be natural, organic. Yeah, yeah. Exactly. Okay. I think that concludes it for. Tell me about ICMR STS program. Really sorry, Rabia, we do not have any information on that because engineering students are not. So ICMR is something I think medical science related. So you can contact your professors for that. But apart from that, I think we won't be taking any more questions. And really, thanks a lot to everyone. I think we should So, answer Areem Ahmed also. wait. Should I know about interested topic in deep before contacting a professor? So, I mean, on the lighter side, if you already have deep knowledge, what is the fun in contacting the professor? On the lighter side. Right, right, right. Okay, but you know, there are different type of professors. People, there are professors who will say, okay, come, I'll tell you from the very initial things. They will be very helpful. There are others who don't have enough time for you to, they won't entertain you. And then you have to find out which one is more suitable for you. But definitely there is no need for you to have any deep knowledge, because you are searching for a knowledge. You are going to the source who is going to tell you the sources from where you can get that knowledge. Okay. Same question is okay. Ariz is writing in a different way. Again, the same thing. Okay. Right, right. Yeah, he's asked one question. What if we don't get any idea of our own while writing a research paper? What about such students? What if a student does not have any idea of his own while writing a research paper? What should he do? And I think we'll end with this question and we'll move to the task allotment since this is a workshop and you guys have been waiting for a really long time for 6+ paper. So, right. What if we don't get Shall I answer Mohammed Kaif question? Definitely, sir. Go ahead. Okay. You know, research paper is actually uh, a compilation of what you think about a particular problem. Okay. In your day-to-day life, you might be facing a lot of problems. Okay.
And whenever you face a problem, sometimes you also try to suggest a solution to yourself कि अगर ऐसा होता तो ये बहुत अच्छा हो सकता था. That is actually the idea. Okay, so what you do is write that idea down in your own handwriting, and then write the problem as such, what is the problem and what solution you are proposing, and then gradually build upon that. Okay, now that problem could be problem related to anything which you feel you are experiencing or others are experiencing. Okay, that is research. Now the solution which you are providing, that is the solution if it is already existing in the market or people have already solved the problem, that will be known to you when you are doing this search in the literature. You go to Scopus, go to the Web of Science, find out how that particular problem has been solved by others, and then try to see whether your solution is different from what is existing in the literature. Okay, and if you think, when you read the ideas of others, when you read the solution of others, there is also one good chance that you may improve the idea or the solution which you have initially come up. So it's a cyclic process. Okay, so there is nothing which prevents you from starting a research. Take any problem which you are facing, try to find out the solution, and that becomes your research topic. Okay, right. That's a really good note to end on. Thank you so It much. really highlights the basics of research. Thank you, really. Thank you so much, sir, for enlightening us with your thoughts and your answers. And thank you, everyone, for asking your questions. And we too really learned a lot from this. And I think we'll move on to the task allotment now. So I'll just share my screen. It will just take 2 minutes. Since this is a workshop, so we do have to give you all some tasks. Okay, so right. So I these hope I are have not disturbed your workshop, no? no. You have made it amazing. Yeah, you Jazakallah. really जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा कहते हैं. यस सर, अगर मैं होता सर, गाइडेंस थोड़ी सी न्यू ही जा रही थी. ये आपने Q&A टाइम पे बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री थी सर. So okay, guys, these are the workshop prompts. There are 2 categories to these. There are general research prompts. Okay, you can just take a screenshot of these and I'll explain. And then there are research prompts for a competition, because ASME for this month we have a theme and we are holding a competition also. So we included this in here. And competition here will have a cash prize for who writes like the most, plagiarism free and the most near to the international standard formats. So the topics are, for the general category, prospects of self-driving cars in India. Okay, application of smart sensors in industry 4.0, or if you are a medical or biology student, you can go for application of smart sensors in the field of medicine or healthcare. Okay. Then review of CNN efficiency for weed detection in crops. This is for especially for the CS and EC students out there. Deals with machine learning stuff, convolutional natural networks they are called, right? So the CNN efficiency, you can write a review paper on this. And for the competition, the theme is the Earth. What we had this month, Environment Day, right? So our theme is engineering investment in the environment. So for that we have a research prompt competition, for which the first title is prospects of biodiesel in India, impact of solar energy on carbon emissions internationally and in India. So you can make a case for both the international impacts and locally in India, what has been the impacts of solar energy, the use of solar energy. Then finally, challenges faced by electric vehicles. This you can do like in general on the international level or on in the scale of India. So what we'll be evaluating you on is your like how close you are to the standard formattings. Okay, शमसी भाई ने आपको बताया APA format, IEEE format, सारी चीजें होती हैं. You can look those up on Google, and you can watch some YouTube videos also on those APA format, especially APA format. You can note that down. And the way you are referencing your papers, how many papers you are taking into account, minimum
4 papers you have to like go through for any of these topics. Minimum 4 papers you have to cite. And another thing is plagiarism. How low you can keep your plagiarism. Okay, so these are the parameters we'll be evaluating you on, and you can mail these papers for the people who are in the R&D group, the SAE and ASME students who are in the R&D group. You can just make the doc file, and you can title it with your name and your roll number, okay, and send it to the WhatsApp group, right? And for those who are outside Jamia from AMU and elsewhere, you can, I'll give you the email ID, asme4 at jmi.ac.in. Okay, so wait, CAC कहाँ से हो गया? ac.in, right? So this is the email ID. I'll send it in the chat as well. You can email us your papers. We are giving a deadline of 2 days. So today is 24. By 12, by midnight of 26th, you have to submit these. Like in terms of competition, if you want to win the cash prize, you can go for this. Then 12 p.m. is the submission date. And for the people who are in the R&D group, yeah, you also have to submit this before 12 p.m. 26th of April. Okay. Right. So your title, like the heading, जो आपकी heading होगी paper की, वो ये सारी होंगी जो topics हैं, ठीक है? इनका आप screenshot ले लीजिए, and this will be your paper headings. Then how you will save the file, like file जब आप save करते हो तो आप उसको नाम दोगे ना, तो for both these categories, you first put in your name, and if you are outside Jamia, just put in the name of your university, and if you are inside Jamia, give your roll number. Okay. So I think that's it for the evaluation, and I'll just leave the email ID in the chat box. Okay, and I think that really now wraps it up for today's workshop. Thank you once again, Shamsi bhai, Muzakkir sir, and everyone who attended, and the team who was working behind the scenes, the operations team and the social media team, for like having such a tremendous work you have done for creating the backup needs and for sharing and stuff. So really thank you all. Any last words, any last remarks, Shamsi bhai? And yes, Muzakkir said, sorry, I just saw you now. Muzakkir said. I think the resource person Mustafa Shamsi deserves a lot of appreciation. Thank you. One reason is that there are 59 students which are still holding up, and I mean 44, 42 minutes beyond the last time. So that tells you, I mean, the interest of the people, how much they are getting from you. I mean, as a teacher, when I start a class, hardly there are 29 students, and they just drain out before 15 minutes are left. So you really deserve a lot of appreciation, because it has been so involving. I mean, I really missed it. I should have joined at 10. So, but looking at the numbers, it should have been a very wonderful one session. So, a lot of appreciation to all the team members. Okay. Exactly. And also, thank you so much to Adnan and team and ASME. I thank every one of you for inviting me. I expected that I would be having such a wonderful time with you guys, and also the people, the way Muzakkir sir just told, that's definitely astonishing for me. I'm really glad and happy for everybody who all stayed. Jazakallah khair. Thank you so much. Take care. Okay, thank you all of you. All right. Thank you, sir. Thank you. I hope we should get about 60 research papers now. Inshallah. Yeah, hopefully. So right, again guys, the deadline is, if you have sessionals and you're in Jamia, the deadline is 29. Okay, by 29 you have to read. यार दिन में कम से कम like आधा घंटा तो निकालो ना, like you can do that. So just what we have to write only no, Aman, totally whatever has been taught you in the session, whatever from the start. I guess Adnan, you will be posting it on YouTube, right?
I'll be posting it on YouTube. I'll share the links on there. Yeah, you will see. You can go through it again. Okay, everything like how a paper is written, right? How to get in the R&D group. We'll inform you later. Yeah, don't worry. Okay, guys. Thank you, and I think we can end the meeting for today. Let's hope we get to see you all in some other function some other time. Okay. In the offline mode. Hopefully, right. In the Alright. offline. Okay. Thank you, guys. Allah Hafiz. Okay, Alright, guys. thank you.